Good morning, everyone. Well, students, in our political science book, the first chapter was power sharing, and this is our second chapter, and the name is federalism. Students, in the previous chapter, we noted that vertical division of power sharing. We noted the different forms of power sharing, and the second form of power sharing is vertical division of power sharing. And according to vertical division of power sharing, the power is shared among the government at different level. One is at center level and another is at state level. So in this chapter we will focus more in these forms of power sharing, which is most commonly referred to as federalism. We will begin by describing federalism in a general term, and rest of the things will be discussed within the chapter. Now let us start the meaning of federalism. Here this is our first question: what is federalism? And now students, let us go back to the contrast between Belgium and Sri Lanka, a small story in our first chapter, power sharing, that we saw in the last chapter, means previous chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government. Means between 1973 to 1990, the Belgium constitution was amended 4 times, and according to that, the powers of central government, they were reduced and they were given to the provincial government, or you may say regional governments. Because regional governments existed in Belgium, they were existed even earlier, but they were not independent. They could not enjoy their independent powers. They had their roles, they had their powers, but these powers were given to them by central government, and they could be taken back according to the wish of central government. Whenever central government wanted or demanded or wished, they could be taken back. So the changes that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers. अब regional government को भी constitution के हिसाब से powers दे दी गई, and that were no longer dependent on the central government. Now the regional government were not dependent on central government, they were having their autonomous power. Thus the Belgium government shifted from a unitary form of government to a federal form of government. But on the other hand, Sri Lanka, it continues to be a let me check it, sorry, continues to be for all practical purpose, हर काम के लिए a unitary system where the national government has all the powers. वहाँ पर national government के पास ही सारी powers है. Tamil speakers, Tamil leaders, they want that Sri Lanka to become a federal system, but it could not be happened. Even you read in first chapter, you learnt that Sri Lankan government favored Sinhala communities and Buddhism was promoted, and Sri Lankan Tamils or Indian Tamils, they were discarded. So now according to or on the basis of these two theories, now let us again discuss what is federalism. Now the broader meaning of federalism means a system of government in which the power is divided between a central authority, I mean to say central or union government, and various constituent units. In general words, we can say state governments in contrast with India. Usually a federation has two levels of the government. Yes, simple, very simple definition of federalism is two sets of government. But now this definition, it has some broader context, and after some time the definition was little bit changed, and now the definition is two or more level of the government. Now let us continue with the chapter. That one is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest.
एक गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए है और जो ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे एरियाज़ पर काम करती है जो सबके लिए एक जैसे होते, एक समान. एंड द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. एज इन इंडिया इट इज दे आर कॉल्ड स्टेट्स that look after much of the day-to-day administering of state. Both these level of the government, they enjoy their power independent of others. Means the state governments, they are not subordinate to the central government. Now let us move further. So in this sense, federations are contrasted. Contrasted means different, means vipareet with unitary government. Now we have discussed about the definition of federal form of government. Now let us see what is unitary form of government or what is unitary system. Uni means one. So the definition is very much clear. Either there is only one level of the government, या तो वहाँ पर एक ही level होगा government का, एक ही government होगी, और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट, या सब यूनिट्स होंगे या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी, बट दे आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट होंगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर. अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर ऑर्डर पास कर सकती है टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. स्टेट government has power of its own for which it is not answerable to the central government. And now on the basis of this criteria, now there are some key elements or key features of federalism. The first one is there are two or more level or tier of the government. जो as we earlier discussed, we came to know that simple meaning is there are two or more level of the government. Second is different level of the government govern the same citizen, कि दोनों लेवल की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेम सिटीज़न पर गवर्न करती है, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन. लेकिन हर लेवल की गवर्नमेंट का अपना एरिया है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, नियम बनाने में, टैक्सेशन, टैक्स लेने में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन. The jurisdiction of the respective level or tier of the government are specified in the constitution. और जो इनका एरिया है दोनों लेवल की सरकार का, उनका जो क्लियरली स्पेसिफाइड, बिल्कुल क्लियर रूप से बताया गया है हमारे संविधान में. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली ग्रांटेड. इसलिए गारंटेड, इसलिए दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस और उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी गई है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. संविधान के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनको कोई भी एक लेवल अपने आप से चेंज नहीं कर सकता. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह के चेंज करने के लिए दोनों ही लेवल की सरकारों से कंसेंट लेना, सहमति लेना, सलाह लेना जरूरी है. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. कोर्ट के पास पूरी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने में हेल्प करे और गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की पावर्स में बदलाव लाए. द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट as an umpire if disputes arise between different level of the government. Sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. And the last key feature of federalism is the federal system thus has dual objective. The first is to safeguard and promote unity of the country while at the same time टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. कि सबसे पहले तो प्रमोट करना है और बचा के रखना है देश की एकता को, ये देश को, और दूसरा अलग अलग जो रीजनल डाइवर्सिटी है उनको अकोमोडेट एक दूसरे के साथ आराम से सहेज कर रखना है. देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फेडरलिज्म को प्रभाव में लाने के लिए. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust
that each would abide by its part of agreement. So an ideal federal system has both aspect. तो एक अगर सही आइडियल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो उसके दो कारण हैं, दो तरीके हैं, दो पार्ट्स हैं. सबसे पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास रखना, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एक दूसरे के साथ समझौता करना, एग्रीमेंट करना, सहमति रखना इकट्ठे रहने के लिए. नाउ द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर, अब बिल्कुल जो पावर को बैलेंस बनाना है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. लेकिन पावर की जो बैलेंस बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, वो हर देश में अलग अलग है. तो इसके लिए दिस बैलेंस डिपेंड्स, अब ये जो बैलेंस बनाना है ये डिपेंड करता है मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट. सबसे बड़ी बात तो है कि इतिहास के आधार पर ये डिपेंड करता है इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड, कि ऐसा हमारा क्या इतिहास रहा जिसके आधार पर हमने फेडरेशन बनाई थी. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट. अब नाउ on the basis of this historical contest, there are two kinds of routes through which federations have been formed. The first route involves independent state coming together. पहला जो तरीका है उसमें सभी स्टेट, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स अपने आप ही इकट्ठी होती हैं एंड दे मेक अ बिगर यूनिट, और इकट्ठे होके एक बड़ी सरकार बनाते हैं. सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी, जिससे कि वो अपनी पहचान को इकट्ठा करके रिटेनिंग अपने कार्य अधिकार क्षेत्र को इकट्ठा करके अपनी पहचान को बनाए रख के दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और वो अपनी सुरक्षा को भी बढ़ा सकते हैं. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स द USA, Switzerland and Australia. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and they are equally strong. And the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. The examples are India, Spain, Belgium, etc. Means maximum of the countries, they have adopted the second route, that is known as holding together federation. In this second category, the central government tend to be more powerful as it is in India than the state government, and very often different constituent units of the federation have unequal power. आम तौर पर यहाँ पर जितने भी constituent states होते हैं उनकी unequal power है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, and even some states have been given some special powers. So this is known as holding together federation. By now we have discussed what is federation or federalism, what are the key features of federalism, and what are the two different kinds of routes through which federations have been formed. So this is all for the day, and bye, have a good day.